सेशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज द डिवाइन वांटेड इट, बिकॉज हनुमान जी, राम जी, जिसको भी, मैंने जो हमारे हायर पावर्स है, वो जब चाहते हैं, उनका जब ग्रेस होता है तभी ये सब चीज पॉसिबल होता है. एंड आई ट्रूली फील दैट आई एम टू स्मॉल एंड टू humble and too I don't know enough. I don't know enough to be able to talk about Hanuman ji and such a huge, enormous topic and energies, right? But because I'm doing it, and the more I try to study and find out and do my research, the more I realize that it's so huge, and I just know one little iota of what I'll be sharing. But I know द डिवाइन डजंट माइंड. वो नहीं कभी माइंड करते हैं कि मैं थोड़ा बहुत लाइक डिस्क्लेमर पहले से ही कि मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई स्क्रिप्चर्स नहीं जानती हूँ, तो भूल चूक माफ करिएगा. आपको इसमें से जो अच्छा लगे उसको रखिएगा, बाकी इट्स ऑल एब्सोल्युटली योर ओन पर्सनल टेक. ऑलवेज आई फील योर रिलेशनशिप विथ योर गॉड हैज टू बी वेरी वेरी पर्सनल. It is a very individualistic journey. You can seek guidance from gurus, from mentors, from teachers who I feel, they also are just madhyams, they are mediums. But ultimately, your journey and your relationship with your divine, आपका खुद का वो होना पड़ता है, right? That is what is important. अब आप लोग को ये पता है, फिर भी I'll repeat that. You all know I was not a very religious person. I was not somebody who was much into rituals. But lately, I have started enjoying it a lot. It gives me a lot of peace. It gives me that kind of comfort. और मेरे को लगता है मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन बीइंग हूं ना, तो कुछ कुछ करने से सबकॉन्शियस माइंड को बोल दीजिए, खुद को बोलिए, थोड़ा शांति मिलता है. देर आर मेनी पीपल जो कुछ बिना किए दे आर एबल टू बी इन दैट लेवल. जो पूजा, आई फील जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शायद उस लेवल में हो जहाँ उनको ये रिचुअल्स नहीं चाहिए. पर मेरे को अभी फील होता है कि बिकॉज आई एम डूइंग दिस, आई गेट मोर अलाइंड बैक एवरी टाइम. इट्स अ लिटिल thing of putting me back into that positive, into a frame of gratitude, into a frame where I move on in life with faith and belief, right? तो हनुमान जी, मेरे को अब पता चल रहा है, वो भी आप सोचिए, इतने आई एम 52, ओके, एट द एज ऑफ 52 आई कम टू नो दैट बिकॉज आई एम अ नंबर 9. Okay, 18th is my birthday. So those who are 9, 18 and 27, they are 9. Number 9 is ruled by Mars, and the Lord of Mars is Hanuman ji, right? And 2025 is also ruled by Mars, by the planet Mars, Mangal, जो बोलते हैं, and मंगल के देव हैं हनुमान जी. इसीलिए मैं और ज्यादा उसको स्टडी कर रही थी, क्योंकि मैं 9 हूँ, प्लस मेरे बर्थ चार्ट में भी वेरी सून मंगल ही आने वाला है, राइट? एंड प्लस दिस ईयर इज ऑल्सो मार्स. So imagine if so much is happening, and I believe in astrology. I believe it's a guiding science. I don't call it predictive, but I find it a very big guiding science, and it helps you take the right action which is supported at that moment. सो मंगल प्लैनेट जो है वो बहुत बहुत पावरफुल है, राइट? एंड दैट प्लैनेट इज ऑल अबाउट एक्शन. दैट प्लैनेट इज रेड. दैट प्लैनेट इज रूल्ड बाय हनुमान जी. ठीक है? तो अगर हम लोग ये साल, आप लोग जैसे मैं एक सेशन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि इस साल में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो काम आपका अटका हुआ था, जिस चीज के लिए आपको हिम्मत नहीं थी, जो चीज के लिए एक्शन चाहिए, वो यू विल बी सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स, यू विल बी सपोर्टेड बाय द डिवाइन एनर्जीज, यू विल बी सपोर्टेड बाय हुएवर यू कॉल आउट टू. तो हम लोग हनुमान जी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो मैं जैसे बोली कि आई फेल्ट वेरी वेरी, I felt, so illiterate. I just felt that, okay, never mind. Thank God at the age of 52 also, God has given me this chance, the second curve where I am able to, discover so much, live in that kind of overwhelm, with so much gratitude and with so much faith, right? So I'm very, very grateful for that. कि इस age में भी आके, it's never too late. मैं इतना कुछ discover कर रही हूँ. मैं जब हनुमान जी के बारे में एक है, मैं जैसे बोल रही हूँ, I really felt very overwhelmed by this entire experience. In fact, I called up my friend and asked her that, you think I'll be able to do this session? I'm feeling that how can I talk about Hanumanji? Who am I? Who has given me that authority? Because he's too large a entity, a energy, whatever you call it. But I think it's the grace of the divine that he wants it.
तो मैं ये चाह रही थी कि अपने सब हनुमान चालीसा है अपने पास, एवरीबडी हैज अ बुक। लास्ट लाइन क्या है, एक तो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। ये लास्ट लाइन है, बट मैं फिर भी, सेकंड लास्ट बोल दो, फिर भी मैं इसको समझाना चाह रही हूँ। दैट जो ये पढ़े, ओके, तो इसमें एक मूट वर्ड ये है कि आप सुनते हैं हनुमान चालीसा, बहुत अच्छा, ऑफ कोर्स इट इज सीपिंग इनटू योर माइंड, इट इज गोइंग इनसाइड, राइट। बट अगर आप इसको पढ़ते हैं, राइट, तो इसीलिए मैं बोली, अगर आप बुक लेके सामने देख के अगर उसको पढ़ते हैं, एक आपके मेंटल मेमोरी में है, राइट, एक और एक ऑप्शन है कि आप ऑलरेडी सुन रहे हैं एक, लेकिन अगर आप बुक लेके, बिकॉज द फोकस इज डेफिनेटली मोर, आप लोग ट्राई करिए ये चीज, ठीक है, कि आप अगर बुक लेके उसको पढ़ के अगर आप हनुमान चालीसा करेंगे, तो बोलते हैं कि उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसी में लिखा हुआ है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि। सो और एक लाइन है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी तुमको अष्ट सिद्धि और नव निधि देंगे, वो उनके दाता है। और दाता कौन है? राखा नहीं है, दाता माने देने वाले हैं, वो तो वेट कर रहे हैं कि मैं तुमको अष्ट सिद्धि और नव निधि दूंगी, देंगे देंगे, राइट। तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। व्हाट डज मीन ऑफ साखी गौरीसा? साखी मीन्स गारंटर, ओके। कोई बोलते हैं ना कि ये काम करना है, मैं गारंटी लूं, तो मेरे पास एक गारंटर है, somebody वेरी पावरफुल। यहाँ पे द साखी, द गारंटर इज गौरीसा। हु इज गौरीसा? गौरी के इष्ट, एज इन शिव जी, द अल्टीमेट। तो हनुमान जी बोल रहे हैं, हनुमान जी का अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो गारंटर कि आपको सिद्धि और सब कुछ मिलेगी, वो शिव जी आपको कर रहे हैं। तो इमेजिन द पावर। और वो, तो ये हुआ, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि। वी टॉक अबाउट द अष्ट सिद्धिज राइट नाउ। साखी, द गारंटर इज गौरीसा, गौरी के पति, दैट इज शिव भगवान। ओके, दैट इज द कल्मिनेशन। इतना पावरफुल है ये हनुमान चालीसा, खाली आप अगर इसको पढ़ते हो तो अभी तक, अब एक छोटा सा आपको चेंज करना है आपके रूटीन में। आई डोंट नो हाउ यू ऑल डू इट, आई एम श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम श्योर यू ऑल नो अ lot more than me also. This is just my humble attempt, okay, please, so forgive me there again if I make any faux pas. This is a very emotional thing for me. I'm just sharing what I know and what I've heard and what I've studied अभी lately. सो अगर अब तक आप सिर्फ रिसाइट करते हो मेंटली, अब प्लीज ट्राई करो कि एक हनुमान चालीसा एटलीस्ट बुक लेके उसको पढ़िए, ठीक है। ये भी बोला जाता है कि व्हेन यू आर जस्ट हियरिंग व्हाट इज रिकॉर्डेड, ओके, यू कैन मिस अ बीट, बिकॉज यू कैन मिस अ लाइन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गोइंग एंड मे बी यू आर नॉट सेइंग इट in your mind also, because you are hearing it, right? So that is the reason you should read it once. and अगर आप वो करते हो, तब हनुमान चालीसा का बहुत ज्यादा पावर आता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग हनुमान चालीसा का पूरा चीज देखते हैं, तो उसमें देयर आर फ्यू लाइंस दैट जस्ट स्टैंड आउट फॉर अस, राइट। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काओ का डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। खाली इतना बोलने से एक हिम्मत नहीं आता है क्या अंदर? यू जस्ट फील, ओ माय गॉड, आई एम सो प्रोटेक्टेड, आई यू नो somebody is there, some kind of supernatural power is there who is going to help me, right? So there are some lines जो, बाकी तो ठीक है, हनुमान जी का प्रेज किया हुआ है, यू नो, तुलसीदास जी इज प्रेजिंग हनुमान जी फॉर हिज deeds, what he has done, and this kind of, उनका जो वैलर है, उनका जो ग्लैमर है, वो जो कर सकते हैं, वो जो किए हैं, उसके बारे में उसका गाथा है। But these are lines which you just pulled on to. And whenever you are in a problem, if you just repeat these also mentally, I genuinely feel बहुत 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 strength मिलते हैं और हनुमान जी सुनते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत सिंपल ट्रिक है दैट जो तुलसीदास जी भी जानते हैं, इसीलिए वो स्टार्ट ही वैसे किए हैं। बर्णेव रघुबर बिमल जसु दो, you know, he starts in the beginning, okay, he starts by talking about Ram. If you realize,
वो बात करेंगे थ्रू आउट हनुमान जी के बारे में, बट वो स्टार्ट करते हैं कि मैं राम, मैं रघुबीर, मैं राम के बारे में बोलना चाहता हूँ। व्हाई? हियर ही इज बीन वेरी क्लेवर, बिकॉज ही इज अंडरस्टूड दैट आप जाके हनुमान जी, जय हनुमान, हनुमान जी करिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उनके प्रेज करेंगे। द ओनली वे यू कैन प्लीज हनुमान जी इज अबाउट बाय टॉकिंग अबाउट राम जी, because he believes that he does not have any entity. His prototype, his energy, his portal is of sheer devotion and surrender and humility. उनको अपना नाम नहीं चाहिए। आप उनको खुश तभी कर सकते हो जब आप बोले कि मैं हनुमान, मैं राम जी का भक्त हूँ, दैट आई लव राम। इफ यू से आई लव राम, हनुमान जी विल से ओके, आई डू एनीथिंग आई वांट फॉर यू। It's as simple as that. So that is why, remember I said that we are going to always start with Ram Ram. So this year also, because it is Mangal and we want to praise, please Hanuman ji to do all our work, we will stick to Ram Ram. And if you realize ये full book में 9 times शिव राम के बारे में बोला हुआ है। हर टाइम एक तो राम को घुसा देते हैं, जो कि हनुमान जी को लगे नहीं नहीं राम के बारे में बात हो रहा है और मेरे को कुछ ना कुछ करना है, मेरे को ये डिवोटी के लिए करना है। तो आप अगर हनुमान मंदिर जाते हो, आप कोई भी जगह जाते हो where you are trying to worship हनुमान जी, you have to say जय सिया राम, or you have to tell him that Ram is everything, then he will feel connected to you. Anyway, this concept I found very, very beautiful because it shows that it is not about him. Usually we make everything about ourselves, right? So Hanumanji is doing everything, but he doesn't want any credit. He doesn't want any name. He doesn't want any fame. All he wants, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि आप मेरे जो प्रभु हैं, जिनके प्रति मैं इतना डिवोशन रखता हूँ, आप उनको पूजिए। आप उनके साथ ठीक है तो मैं आपके साथ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। In fact, there's a story. There's so many stories, right, that keep going on. This culture of passing on stories through kathas. Now we have YouTube and social media. Earlier, the whole medium was just kathas. इसीलिए इतने सारे कथा होते थे ना। तो बोलते हैं कि राम जी जब everybody was going away to heaven, right? So हनुमान जी को बोला गया कि आप कब जाओगे? तो बोला जब तक इस धरती में एक भी आदमी राम का नाम ले रहा होगा, I cannot leave. I have to be here and I have to protect this universe. I have to protect this earth. I have to protect these people. तो जब तक राम का नाम रहेगा, हनुमान जी is not in that realm. He is right here with us, doing his best. खाली उनको बुलाने का देरी है, and action. You know how monkeys are so fast. You never know when they're just there, right? So that is the power that he has. He can just come anytime. He is just there for you to do whatever. All you need to have is such a proper अंदर से वो डिवोशन अगर वर्ड किसी के साथ एसोसिएट होता है तो दैट इज हनुमान जी। डिवोशन, सरेंडर, where he doesn't, where you are not thinking about yourself. He is that one God. He doesn't need any praise. So मैं जैसे बोली ये दिस फुल ईयर हम लोग का मोटिव तो यही है ना कि हम लोग का 2025 बहुत बहुत पावरफुल जाए। आप लोग प्लीज राम का नाम लीजिए, जय सिया राम करिए, जो भी करिए, हनुमान जी ऑटोमेटिकली आपके पास रहेंगे, और आपके पास रहेंगे तो आपका मंगल जो है, ऐसे भी मंगल मीन्स गुड, राइट? मंगल हो, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट भजन लास्ट टाइम, राइट? मंगल हो, सबका मंगल हो, अगर वो है तो आपके पास ऑटोमेटिकली मंगल होगा, and you will have the power of the action, the positive action of the planet Mars in your control. Okay, so that is one very beautiful thing. Another thing that I wanted to elaborate is that there is a certain way to do Hanuman Chalisa with breath work. तो आपको समझना होगा कि हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान, राइट? ही इज लाइक एयर. यू कैन डू विथ एनीथिंग. पानी के बिना आप रह सकते हो शायद 7-8 दिन, बट बिना एयर आप रह सकते हो नहीं. हाउ लॉन्ग? यू जस्ट डाई, राइट? व्हेनेवर यू सफोकेटेड. सो हनुमान जी इज एयर. ही इज एवरीवेयर एंड यू नीड दैट फॉर सर्वाइवल. सो इसीलिए जैसे मैं बोली दैट please be careful that you do your pranayams, because you're literally invoking. जो भी करते हो mindfully करना, खाली योगा के हिसाब से मत करो, mindfulness के हिसाब से करो, meditation के हिसाब से करो, ठीक है? तो आप जो हनुमान जी, आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो, तो you have to understand that you are taking in the power of हनुमान जी inside.
तो ये ब्रीदिंग का मैं टेक्निक समझाती हूँ। आप चाहे एक ही हनुमान चालीसा करते हो, पर अगर आप इस तरीके से करते हो, आप रियलाइज करेंगे पूरा चीज ही वैसे बना हुआ है, where you can combine it with breathing. Okay, so जब आप बोलेंगे जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मेंटली बोल रहे हो, ठीक है, यू आर टेकिंग अ डीप ब्रेथ इनसाइड एंड द ब्रेथ शुड रीच योर बेली। एक बार ट्राई करिए सब कोई, मेंटली बोल के। एवरीबडी सिट डाउन फर्स्ट, सिट डाउन प्रॉपर्ली, ठीक है, सिट डाउन प्रॉपर्ली। अगर आप लोग बैठ सकते हो वे योर स्पाइन इज स्ट्रेट, इट इज ऑलवेज बेटर, अदरवाइज फाइन, बट बी जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. So this is a very, very, in fact, if you do 40 breathings the way it's been told, you can't imagine how much oxygen is going to go into your brain and already your health will improve. Okay, so what you need to do is, जब आप बोल रहे हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप डीप ब्रीदिंग करके it should go right up to your belly. इनसाइड आप देखिए उतना ही टाइम लगता है फॉर द ब्रेथ टू गो इनसाइड, एंड वी आर डूइंग बेली ब्रीदिंग. ओके, जो डायफ्राम ब्रीदिंग बोलते हैं ना, द राइट वे टू ब्रीथ, दैट व्हेन यू ब्रीथ योर स्टमक शुड कम आउट ऑटोमेटिकली, and when you exhale your stomach should go inside. That is the best way to handle stress. That is what yoga breathing is all about, right? So Hanuman Chalisa जब आप mentally करते हो बैठ के एकदम properly, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. आप समझे ये चीज? Are there any questions about this? If you can write in the chat box, because I want you all to get this breathing technique very clearly so that you all can do it, and it has multiple benefits. एक तो आप पवन पुत्र हनुमान को ले रहे हो अंदर, एक आप हनुमान चालीसा साथ साथ कर रहे हो, आपका प्राणायाम हो जा रहा है, सब कुछ कॉम्बिनेशन में एक बार में ही हो जा रहा है. आप समझ गए? तो दैट इज द पावर ऑफ दिस Hanuman Chalisa, where a Pavan Putra Hanuman, who's air, who's the Lord of air, who's the Lord of life, उसको आप प्राण क्या है? What is prana? Prana is what we survive with, right? That is Hanuman ji. Imagine his power. So that Jai Hanuman Gyan Gun Sagar, पेट फुला, right inside. जब आप breathe कर रहे हो, it should not be up to your lungs. It should go right inside to your solar plexus. By the way, if we'll talk about this chakra, remember I've been saying that chakra class करेंगे, chakras के ऊपर करेंगे. The reason I haven't been doing was because I was studying about it. Now I feel I've reached a position where I can talk for 1 hour, 2 hours, 3 hours, whatever, enough to be able to share with you all. But let me tell you, when you breathe, it should go right up to your solar plexus, because that is where Hanumanji stays. Fire, the fire element. Okay, so that is how you are going to do. Jai Hanuman Gyan Gun Sagar, Jai Kapis Tihu Lok Ujagar, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. ये पूरा ऐसे ही बना हुआ है चौपाई, ठीक है? तो आप लोग ये दो चीज ट्राई करेंगे अब से, एक तो उसको पढ़ना और दूसरा डूइंग इट, कंबाइनिंग इट विथ ब्रेथ वर्क. So even if you are not religious, even you are not spiritual, even if you don't believe in Hanumanji, even if you don't want to believe in one proper portal of energy, this will help you, because you are doing pranayam, and pranayam in a certain systematic way, which we all know has huge benefits. Yeah, because you can't say it as well as do the breathing, Gita. So you have to do it, mentally. माइंड में बोला, because if you say it, आप breath work नहीं कर पाओगे. How do you say the next sentence? See, when you're breathing in, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप breathe किए, ठीक है? इन जय कपीस तिहु लोक उजागर, आउट हुआ, फिर breathe किए, नेक्स्ट लाइन. सो ऐसे करके आप 40 कर रहे हो, 40 हो जाएगा आपका प्राणायाम या breathing in and out only by doing the Hanuman Chalisa, and that is the right way, where you combine the power. And when you're doing it, do it with that mindfulness that you are engaging, that you are soaking, that you are literally absorbing that power of Hanumanji in the air, because he's Pavan Putra Hanuman. He is life, he is prana, he is potent, he is the one who is making us live, he is our protector, he is पावरफुल बियॉन्ड वर्ड्स. उनको राम जी भी उन्हीं के पास गए, गीता में भी रथ के ऊपर हनुमान जी का फ्लैग है ना, वो बोलते हैं ना कि उनको सुनाना था. एक्चुअली द एवरीवेयर हनुमान जी इज देयर. ओके, ही इज दैट पावरफुल. और ये तो उन्हीं का साल है, मंगल का साल है.
तो आप लोग ब्रेथ को उसको उसको कंबाइन करिए इस चीज को, ठीक है। तो ये दूसरा चीज था। तीसरा जो उनका है ना कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। So what are the Ashta Siddhi? So like I said, my Hindi, you all know my Hindi, but by now everybody has accepted it. Thank you so much. But what are the Ashta Siddhi? I've been learning all these Ashta Siddhi and Nav Nidhis, and it's like, literally a ocean has opened up for me, जो कि my mom will be very happy कि मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा dabble कर रही हूँ अब. So there are 8 siddhis, okay? Anima, Mahima, Garima, Lagima, Prapti, Prakamya, Ishtva, okay, this is a tongue twister for me. Vashutva. So Anima means Hanumanji had this capacity to become absolutely like a molecule, like an atom, जो कि हम लोग देख नहीं पाते हैं, right? He could just become anima, ability to reduce one's size and become absolutely like an atom or a subatom which is not visible. At the same time, उसका opposite है महिमा. He can become so big. महिमा word use करते हैं ना, इसकी महिमा कैसी है? You can become so large. You can be so large that you are like infinity, right? At the same time, he had the capacity to have गरिमा. ये इस चीज में बहुत गरिमा है, मींस वजन है. इसकी बात में बहुत गरिमा है. Many girls have the name Garima, right? It means that vazan, that whatever they say, whatever they do, or their presence has a lot of weight. Okay, that is the meaning of Garima. It is the capacity to become very, very heavy. Laghima means the capacity to become so light that he was sitting in the branch of the tree, right? In Ashok Vatika when he came to give the ring to Sitama. So what they're trying to say is that Asht Siddhi, अगर आपको हनुमान जी अष्ट सिद्धि देते हैं, माने आपका capacity हो जाएगा to be so elastic with every situation in life. Please understand, अगर आपको अष्ट सिद्धि मिले तो क्या होगा? You will become a person who is just able to handle every problem, every relationship, everything, because you know when your ego needs to be large, when you have to be no ego, when you have to be light-hearted, when you need to be really, really stubborn and strong. You get my point? How it links to human behavior. That अगर हम लोग को ये capacity मिल जाए, दूसरा क्या है? प्राप्ति. You have the capability. आपको कुछ भी प्राप्त करने की शक्ति मिल जाती है. आप प्राप्ति पाते हो. फिर आप पाते हो प्रकम्य means the ability to acquire anything. कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी आप acquire कर सकते हो. You can become like Ishtva means you can become like Ishwar. I'll share this slide with you all. मेरा pronunciation थोड़ा गड़बड़ जा रहा है. किसी को भी वश करने का कैपेसिटी हो सकता है आपके पास, ठीक है. तो ये 8 सिद्धि जो है, अगर आप हनुमान जी के को इष्ट देव बनाते हो, और यू डू द हनुमान चालीसा, जस्ट रिसाइटिंग द हनुमान चालीसा, यू विल बी गिफ्टेड बाय दीज 8 सिद्धीज, एंड द गारंटर इज शिव जी, हु इज द अल्टीमेट डिवाइन. ठीक है. वैसे ही उसमें नव निधि भी है. देयर डिफरेंट टाइप ऑफ लोटस है, अलग अलग टाइप के सफायर है. एक 9 निधि का एक तो पूरा बना हुआ है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है, इन द ग्रुप, सो दैट यू ऑल हैव दिस आल्सो. तो as to sum it up, because I know we all waiting to chant, there are 3 things that we have told you, we have learned. Number 1, you need to read it. Okay, so if you read it with a book one by one, it happens better. Number 2, try to combine your breath work, the doha also with the breath. Yes, absolutely. Try to combine the breath work, and you know what, you try it. I'm telling you, you won't be successful that you can do 40 all with the breath work. By the time you finish, there'll be so much oxygen in your head, you'll feel light-hearted. Like I tried doing it, my head was spinning, because I'm not too much into yoga, pranayam, which other people think I am, but actually I'm not. I'm very ordinary and normal that way, so you'll feel that your head is spinning. तो आप ट्राई करिए, जितना कर सकते हो, धीरे 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 ऐसा पोजीशन आएगा जहां आप ऑटोमेटिकली ब्रेथ वर्क को कंबाइन कर पाओगे. पर
बी अ स्टिकलर फॉर रूल्स कि ये सही है वो गलत है, आप कैसे कर रहे हो, आपको क्या फीलिंग है उस टाइम, हाउ आर यू मैनेजिंग टू कंबाइन ब्रेथ वर्क with the Hanuman Chalisa is something that you need to figure out, but this is something which you learned, which you all need to practice. Okay, उसका माने multiple benefits है. And always remember belly breathing, diaphragm breathing, it has to go right inside, deep breathing, आपके belly button, like I said, solar plexus तक जाना चाहिए. That is where Hanuman ji resides. That is his chakra. We'll talk about that more in another session. So this is one breathing you all have learned. और दूसरा, जैसे मैं बोली कि इट इज ऑल अबाउट फेथ, ये और एक जो पूछते हैं ना कि हनुमान चालीसा कैसे करना चाहिए, इज देयर अ वे टू डू हनुमान चालीसा? नो, आई वेंट थ्रू होल लॉट ऑफ पॉडकास्ट, आई वेंट थ्रू होल लॉट ऑफ रील्स, एवरीथिंग, और जो बड़े बड़े जो पहुंचे हुए संत महात्मा हैं वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हनुमान चालीसा करने का कोई गलत तरीका होता ही नहीं है, तुम अगर श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, सरेंडर से करो, डिवोशन के साथ करो, किस भाव से कर रहे हो, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। और उसमें बस जैसे मैं बताई, एक ही ट्रिक है कि आप हनुमान जी का बहुत सारा बड़ाई कर दो और राम जी का नाम मत लो। तुलसीदास जी भी डर के मारे 9 बार उसमें राम जी राम जी राम जी किए, जो कि वो हनुमान जी को अलाइन रख सके, पकड़ में रख सके। तो हम लोग तो चीज ही क्या है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग योर ब्रेन एंड बीइंग टू लॉजिकल अबाउट इट, जस्ट रिमेंबर हनुमान जी, जैसे आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर ऑल विमेन एंड पेरेंट्स, आई थिंक टू अंडरस्टैंड इट, कि अगर हमारे बच्चे लोग का कोई बड़ाई करता है तो हम लोग ज्यादा खुश होते हैं ना, देन अबाउट आवर सेल्व्स। कोई आपका बेटा को बेटी का बड़ाई करेगा, देन आप तो एकदम यू विल बी सो मच हैप्पियर देन कोई आपका बड़ाई करे। सेम थिंग हनुमान जी, इतना सिंपल है, हम लोग के लिए तो नॉर्मल है, हाफ द टाइम तो वी आर डूइंग दैट ओनली फॉर अदर्स, राइट? सो नाउ आल्सो यू बीन टोल्ड लीगली दैट आप राम जी का बड़ाई करो, हनुमान जी बहुत खुश रहेंगे। It's as simple as that. So that is the trick that we need to do. And of course, अपने हनुमान चालीसा जो करेंगे वो विथ डिवोशन करेंगे, पीरियड्स में कर सकते हैं, कोई रिलीजन का इसमें कुछ नहीं है, कोई तरीका उसका कुछ नहीं है, कोई पॉस्चर का कुछ नहीं है, दिन रात कर सकते हैं, एनी एंड एवरी सिंगल, बिकॉज इट इज रिटन, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई भी पढ़ सकता है, ये देयर इज नो कैटेगरी, कोई भी ये पढ़ सकता है। इसके बारे में भी बहुत लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन है, दैट इट इज नॉट बीन डिवाइडेड, एनी एंड एवरीबडी कैन डू द हनुमान चालीसा। So there's another thing which I wanted to share, that there is, you all must have heard about the Panchmukhi Hanuman. Have you all heard of the Panchmukhi Hanuman? तो यूजुअली पंचमुखी हनुमान को लोग, उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज है, दैट कि तंत्र है, ये नहीं रखना चाहिए, रखना जी भैया, आप ले चाहिए, जाइए होल लॉट ऑफ थिंग्स। और आप See, there's so much matter in the world. You have to choose what you feel good about. Just understand this one funda, because everything is made by human beings. That person wrote, and just because maybe he had more budget in his social media and he's shouting all over doesn't make him right. Please understand that concept. Okay, that just because it is seen more, just because he's a orator, या उसको बोलने का स्टाइल ऐसा है कि आपको इम्पैक्ट करे, कोई जरूरी नहीं है वो राइट हो। आपके लिए, आपको जिससे शांति मिल रही है वही राइट है, ठीक है? तो नाउ कमिंग टू हनुमान चालीसा, एक तो मैं TRS का पॉडकास्ट में देखी थी, वेयर दे से दैट हनुमान, पंचमुखी हनुमान इज मोर कंसर्न विद तंत्र। ओके, फिर दूसरा जगह मैं पढ़ी, एवरीबडी हर्ड ऑफ दिस श्री Rasraj Ji Maharaj? I will send some links. Rasraj Ji Maharaj is somebody I've discovered in my journey of finding Hanuman Ji, and you'll be amazed at the kind of beauty that he has, the way he speaks and the way he'll make you feel. So Panchmukhi Hanuman क्या है? It is supposed to, मैं कहीं पढ़ी थी that it takes care of all the vastu doshas in all the directions, because उनका 5 मुंह है ना, ऊपर है और 4 है। सो मैं इस बार अपने दोनों बेटे लोग को एक एक पंचमुखी हनुमान दी, कि ऑल आर लिविंग इन अमेरिका, I can't do much about the Vastu and the Feng Shui and all, but you please keep this Panchmukhi Hanuman, because he will take care of all the directions, all the 4 directions, and plus give you energy from the divine.
राइट। सो इस इनका वो रसराज जी महाराज बोलते हैं कि मैं तो मानता हूँ कि पंचमुखी हनुमान बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से तो एक एक हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, एक हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं, एक हनुमान जी जाप कर रहे हैं। सो ही डिस्क्राइब द इंटायर 5 dimensions in a very different way, in a very beautiful way, which was so peaceful. Okay, so if you all feel inclined, you all can keep a पंचमुखी हनुमान. मैं अपने बच्चे लोग को दी हूँ. I just thought I'll share that with you all. और बोलते हैं पंचमुखी हनुमान रखने से वास्तु दोष जहाँ का भी है वो हट जाता है. So that is another thing which you all can do. और एक जब राम का बात करते हैं हम लोग, तो बोलते हैं ना कि वो हनुमान जी को जब रिंग दिया ना सीता जी के पास ले जाने, ही पुट इट इन हिज माउथ. Do you all know this story? That he put it in his mouth. So they asked him, why did you put it in his mouth? Why did you put that in your mouth? He said, because जो उसमें लिखा हुआ है राम, वो तो मैं मुंह से ही बोलूंगा ना. Because he keeps on saying राम 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 राम, तो उस रिंग में राम लिखा हुआ है, इसीलिए वो मुंह में रखे, इसीलिए वो राम राम बोल दे, क्योंकि वो तो मुंह में रहेगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मेटाफर दैट आप भी जवान में राम रखिए. राम 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 जो भी करेंगे, जय सिया राम इन योर ओन वे. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी. जब हम लोग राम का भी बात कर रहे हैं, राम इज पुरुषोत्तम राम. इट इज अबाउट बीइंग इंटेग्रिटी होना होगा. आप एक तरफ राम राम करेंगे और एक तरफ सब उल्टा पलटा काम करेंगे, तो वो राम नहीं हुआ, ये याद रखिएगा. बिकॉज राम इज ऑल अबाउट राइचियसनेस, अबाउट इंटीग्रिटी, of being of sacrifice, of doing for the family. Correct? So when we are talking of Ram or Sita or Hanuman, please understand these are energy portals. They represent certain qualities. तो आपको वो चीज इम्बाइब करना होगा, आपको भी उनकी तरह बनना होगा, तभी वो वर्शिप हुआ. खाली मुंह में राम और पीछे अलग से आप अलग ही लेवल में गॉसिप कर रहे हैं, ग्रम्बल कर रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंटेग्रिटी नहीं है, राइचियसनेस नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, देन देर इज नो राम. राम राज्य नहीं हुआ वो. तो वो सब चीज, ये इतना गहरा एक तो साइंस है. साइंस बोल दीजिए, कल्चर बोल लीजिए, हमारे सनातन धर्म जो भी बोल दीजिए, उसमें बहुत डेप्थ है. तो आपको वो सब चीज समझना होगा. ठीक है, तो राम एंड हनुमान विल टेक केयर ऑफ our 2025, and it's going to be extremely powerful, and it's going to be full of action, but positive action. And the only thing that we need to control, friends, I repeat once more, Hanuman ji is also the fire element. He stays in the solar plexus. Mars is about action, is about, he's a warrior, he's a general. Okay, please keep your tempers in control. Please keep your tempers in control. Don't be too aggressive. The beauty is that you need to be like Hanuman ji, so powerful yet so gentle. You know what I mean? So powerful yet somebody who's so, in devotion, in surrender mode. That is the balance that you need to do. आप कर रहे हो फिर भी आप घमंड नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो फिर भी जता नहीं रहे हो, आप कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आप वो बैलेंस मेंटेन कर सक रहे हो. वो है हनुमान जी. इट्स अबाउट सरेंडर. इट्स नॉट अबाउट कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं बोल के मेरा वो घमंड है. वो होने से खत्म. यू आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ हनुमान जी. So you understanding, these are all different representations of how we need to lead a particular life. Okay, so I think this was a lot sharing all this. I'm sure thoda bahut benefit to mila hi hua aap log ko. I'm sure there's so much you all already knew, but revision is always good. So now we can do the Hanuman Chalisa. We can all chant together. That will be nice, right? So मैं चाहूंगी प्लीज आप लोग थोड़ा कैमरास ऑन करो. और it'll be good, if we just put our cameras on and do it together. Group energies are very, very, very powerful. You all know about quantum physics, right? Collective consciousness, quantum physics, all this is that your energy and my energy and everybody's energy is connected. So when you meditate here, like you say, every morning get up and say a prayer for Mother Earth, say a prayer for somebody else, because your prayers, your energy will go to that person through the collective energy which is there.